today going to the last problem. So last problem एटा छाड़ी थिले तो स्टार्ट करिया कोन दैछि क्वेश्चन टा पढिबा. Calculate the quantity of earthwork for 200 meter length for a portion of a road in a uniform ground. The height of banks at the two end being 1 meter and 1.6 meter. The formation width is 10 meter. The side slope 2:1. 2 means horizontally, 1 is vertical. Assume that there is no transverse slope. Okay, देखो क्वेश्चन कौन देछि ना कैलकुलेट करिया पे देछि गोटे एर्थवर्क 200 मीटर लेंथ रो एर्थवर्क कैलकुलेशन करिया पे देछि आ तार कौन देछि बैंक ऑफ हाइट टू एंड फर्स्ट एंड हाइट माने d1 देछि 1 मीटर एंड d2 देछि 1.6 मीटर. देन द फॉर्मेशन विड्थ 10 मीटर. दैट मीन्स formation width means b is given 10 meter and side slope 2:1. That means s is side slope s equal to 2. That means s is taken as horizontal, always be taken in horizontal. Then assume that is there no transverse slope. Okay, then we are find out quantity of all this road in the three formula. We know this three formula. Okay, then start the problem. Okay, comes to method 1. Method 1 कौन थिला तो मेथड 1 फार्मूला जानि छ. मेथड 1 फार्मूला कौन क्वांटिटी ऑफ फार्मूला bd plus sd square into length. Okay, leave that. Then first तुम give what is given data or given, then write down what is the given data. Width देछि b equal 10 meter and s means side slope is equal to 2. That means always taken horizontal. And comes to length equal to 200 meter and depth d means mean depth always I am saying d1 plus d2 divided by 2. Okay, so calculating the mean depth 1 plus 1.60 divided by 2, that comes out 1.30. Okay, then we found out all the values and put the values in the formula and get the answers. Okay, then comes to method 1's. Okay, b here is b10 and d mean depth 1.3 plus s2 into d square 1.3 square into 200. Simplify it, it's come to 3276 cubic meter. Okay, then comes to method 2. Okay, method 2 I am deriving what is the formula quantity mean section area into length. What is mean section area? Mean section area is also a1 plus a2 divided by 2. Okay, so what is a1? I am also saying a1 is bd1 plus sd1 square. So we know value of b, also value of d1 and s. So put the value and get the answer. So a1 comes to 12 square meter and then calculate a2. So a2 also calculating the values comes to 21.12. So put this value on mean section area a1 plus a2 divided by 2. So getting this answer is equal to 16.56 square meter. Okay, is that clear? Then put this value mean section area value and also length value and calculate quantity of method 2. It's come to 33.12 cubic meter. Okay, then method 3. What is method 3? By piezometric formula. Okay, so you remember all that quantity of piezometric formula is L by 6 a1 plus a2 plus 4am. You know a1 a2 formula, you don't know am formula. So am formula is bdm plus sdm square. What is dm? Dm you know mean depth. So mean depth, how to calculate mean depth? Mean depth is d1 plus d2 divided by 2. Okay, is that clear? So in this way we are putting the value and getting the answer dm mean depth. Okay, mean depth comes to 1.3 meter and it is also calculated in the method 1 do where dm is calculating. Okay, then what? Putting the value in quantity formula L by 6 L 200 divided by 6. Okay, a1 comes to 12 square meter, then plus a2
21 plus 12 square meter plus 4 m comes to 16.38. So this value calculating and this value comes to 3288 cubic meter. Okay, then example 2. So what are given in the example 2? I am telling. Calculate the area of the side slope of the portion of a bank for a length of 200 meter. The height of bank at the 2 and 2.50 meter and 3.50 meter, and the ratio of the side slope 2:1. ओके, कौन कही ना कैलकुलेट करने गोटे 200 मीटर पर्सन को जार 2 एंड फास्ट एंड 2.50 एंड सेकेंड एंड 3.50 मिनट एंड इट्स साइड स्लोप 2:1. दैट मीन्स टेल मी व्हाट इज s इक्वल टू 2. यू नो horizontal equal to vertical, horizontal equal to side slope. Okay, is that clear? Second कौन देछि ना, if the side slope are provided with 15 cm thick stone pitching, calculate the cost of pitching at the rate of rest 150 per cubic meter. देछि दे जदि हम 15 थिक रो स्टोन पिचिंग करवा साइड स्लोप रे, जो स्लोप साइड स्लोप माने जोटा साइड रे दिखाई तो से हम 15 cm थिक रो स्टोन अप्लाई करवा तो आमको गोटे क्यूबिक मीटर पर 150 क्यूबिक मीटर आमको दवापाई पड़ो. तो सेमती आम मत कह केते माने केते रेस आमर खर्च हम. फास्ट आम जानापी पड़ो केते क्वांटिटी आमर दरकार. ओके, तो फास्ट क्वांटिटी बाहर करवा. तो क्वांटिटी बाहर करने हेले आम क्वांटिटी फॉर्मूला कौन, एरिया इंटू थिकनेस. ओके, वी नो थिकनेस आम जानी तो एरिया आमको कैलकुलेशन करने पड़ो. ओके, दैट क्लियर. तो एरिया फॉर्मूला कौन, टू साइड स्लोप जो थी तो फॉर्मूला है 12 इंटू डी रूट ओवर ऑफ s स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो ओके देन कैलकुलेटिंग मीन डेप्थ इक्वल टू 2.5 प्लस 3.5 divided by 2 equal to 3. You know, then comes to slope breadth at mid section. तो आम जानी कौन एल जानी आम कौन डी s स्क्वायर प्लस 1 काढ़ार अच्छी. ओके, तो डी रो वैल्यू केते 3. ओके, जानी 3 माने मीन डेप्थ. देन साइड स्लोप s इक्वल टू 2 एंड प्लस 1. ओके, solving this equation it's come to 6.71. ओके, 7 मीटर. देन पुट कर दबा वैल्यूटा एरिया ऑफ द टू साइड स्लोप. फॉर्मूलाटा मन रख, एरिया ऑफ टू साइड स्लोप जो काढ़ा देती 12 इंटू डी रूट ओवर s स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो पुटिंग 2 इंटू एल है 200 प्लस बाहर कले साइड ब्रेड्थ ऑफ मिड सेक्शन 6.71 एंड कैलकुलेटिंग दिस आंसर इज कम्स टू 2684 स्क्वायर मीटर. ओके, देन आम बाहर कर कौन सेकेंड पॉइंट देजी आम केते अमाउंट खर्च हम यदि आम 15 cm थिक स्टोन पिचिंग करवा. ओके, देन क्वांटिटी ऑफ पिचिंग एरिया इक्वल टू थिकनेस. क्वांटिटी आम बाहर करवा. ऑलवेज यू नो, ऑलवेज रिमेंबर क्वांटिटी है एरिया इनटू थिकनेस. व्हाट इज इट इन यूनिट मीटर क्यूब. ओके, देन एरिया इक्वल टू 2684 इंटू थिकनेस 0.15. ओके, फाइव 0.15 15 cm अच्छी कन्वर्ट है मीटर रे तो 0.15. कैलकुलेटिंग इट्स कम टू 4026 क्यूबिक मीटर. ओके, देन स्टोन पिचिंग जदि गोटे क्यूबिक मीटर को 150 टका खर्च हुए देन 402.6 क्यूबिक मीटर में केते टका खर्च इंटू मल्टीप्लाई कर दो 150 देन इट्स कम टू 60,390 रुपीस. ओके, ओके, देन we discuss about example number 3 in our next online classes. So thank you all of you.